Reza, should I start the meeting? Yes. Very good morning to all the distinguished participants in the inaugural function for the inauguration of IGNOU-MSDE extension centers at 33 different places all over the country today. We are very fortunate that we have with us Honorable Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Rajesh Agarwal ji. We have with us Honorable Vice Chancellor, Indira Gandhi National Open University, Professor Nageshwar Rao sir. Distinguished members from the Ministry of Skill Development, Government of India, our Pro-Vice Chancellors, directors and heads of different schools and divisions, the regional directors in the Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship at 22 places across the country who are part of MSDE. There are 19 NSTI, National Skill Training Institute, specifically meant for women. I welcome the head of these institutes. I also welcome the heads and the directors and joint directors and deputy directors heading the NSTIs, whose number is 14 across the country. And above all, I welcome our regional directors of IGNOU regional centers, our senior officers of IGNOU, and our coordinators who are present at many places. It's indeed a great moment for all of us, because on 18th of January, MSD and IGNOU have signed a memorandum of understanding for establishment of IGNOU centers across the country in National Skill Development Institutes, ITIs, Pradhan Mantri Kaushal Kendras, and Jan Shikshan Sansthans. And on that day, Honorable Secretary, Ministry of Education, Ministry of Skill Development desired that we should immediately start establishing centers, joint centers, extension centers, to begin with at the National Skill Training Institutes, whose number is 33. And I'm very happy that today we are all assembled across the country through virtual mode for this inauguration. We'll start this program with the Kulgit of Indira Gandhi National Open University. I request that the Kulgit may please be played. शिक्षा के अधिकार की ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन का मान है, सम्मान है, पहचान है, राष्ट्र का मान है, वरदान है, अभिमान है, राष्ट्र का मान वरदान अभिमान है, सर्व
the Joint Secretary, Ministry of Skill Development, if Madam is there to say a few words on this occasion. Joint Secretary, Madam, from the Ministry of Skill Development. Dr. RP, Professor RP Das, our Pro Vice Chancellor, IGNOU, he is also connected with us in the online mode. May I now request Professor RP Das, sir, Pro Vice Chancellor, IGNOU, to say a few words. Good morning, everybody. Our esteemed Honorable Vice Chancellor, sir, and the Secretary, the Ministry of Skill Development, and Professor Roy, and all others who are present here. In fact, it is a great occasion for our university, especially with the launching of this agreement with 36 institution. It's a landmark achievement in the history of the university. I congratulate the Secretary, Skill Development, and our university authorities for launching this, hosting this program. Thank you very much. Thank you, sir, for your blessings. May I now request Professor Satyakam, our Pro Vice Chancellor, to say a few words. धन्यवाद डॉक्टर महापात्रा जी, आदरणीय कुलपति महोदय और सचिव महोदय, कौशल मंत्रालय और हमारे सभी साथी उपस्थित। आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है कि जब भी इस विश्वविद्यालय का जो महत्व उद्देश्य है जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का, और केवल ज्ञान परंपरा की शिक्षा नहीं बल्कि कौशल शिक्षा। मैं बार बार सबको कहता हूं, खुद को भी याद दिलाता हूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इस देश के वंचित लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए की गई थी, और केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि कौशलपूर्ण शिक्षा। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय का जब पाठ्यक्रम निर्मित हुआ तो उसमें पहली बार राइटिंग फॉर रेडियो, राइटिंग फॉर ट्रांसलेशन और तमाम ऐसी ही चीजें, पत्रकारिता, ये हमारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम में शामिल किया। इसके अलावा अगर हम अपने स्कूल की संरचना को देखें तो देखेंगे कि कौशल के क्षेत्र में, एक्सटेंशन के क्षेत्र में अनेक विद्यापीठ स्थापित किए गए, और इस विश्वविद्यालय के उसी महत्व उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिक्षा, गुणवत्ता, कौशल और अनुसंधान, इन सारे प्रयत्नों को लेकर यह जो आज संपन्न हो रहा है कार्य, यह उसको इग्नू के उद्देश्य को और भी क्रियान्वयन के लिए मजबूती प्रदान करेगा। एक जो इतना बड़ा स्किल हब सेंटर इग्नू का बनने जा रहा है, और उसके चलते इग्नू के हाथ मजबूत होंगे, इस राष्ट्र का हाथ मजबूत होगा, क्योंकि अब केवल हम जन जन तक शिक्षा ही नहीं बल्कि जन जन तक कौशल और स्किल भी पहुंचा सकेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसको हम पूरा कर सकेंगे। तो इसके लिए सभी लोगों को बधाई जो इस कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में लगे हुए हैं, और खासकर अपने नेतृत्व को और मंत्रालय के नेतृत्व को, और इतना बढ़िया जो संगम हुआ है, और उसमें इस संगम में जो हम स्नान कर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए
बहुत ही पुनीत अवसर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you, Professor Satyakant, for your words of encouragement and inspiration. May I now request Professor Sumitra Kukreti, Madam, our Pro Vice Chancellor, to say a few words on this occasion. Thank you, Professor Mohapatraji. Good morning to all. Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao ji, Honorable Secretary, Ministry of Fiscal Development and Entrepreneurship, Director MSDE, my fellow Pro Vice Chancellors, Director RSD, and all other dignitaries and regional directors who are attending this program virtually. It is really a matter of great pleasure that today the virtual inauguration of 32 IGNOU and MSDE centers is being done. This is remarkable to note that this MOU has been signed in very short span, and this clearly indicates that Honorable Secretary is very keen on this issue. Definitely, this will open new vistas for learners who have been enrolled in ITIs and along with the required skills for the job, which they acquire from ITIs. Degree from IGNOU will help them chisel their skill along with imparting opportunity for further growth in their profession. On the other hand, these centers will indirectly expand IGNOU's reach among masses, which is the main mandate of IGNOU. I congratulate all the IGNOU fraternity and wish this collaborative effort will be a great success. Thanks to one and all. Thank you very much, Madam, again for encouraging us in this noble initiative. We will now open the floor for interaction with our field officers from Ministry of Skill Development as well as from IGNOU. To start with, I'll be inviting NSTI officials from Indore. May I now request Mr. V. Babu, NSTI Indore, to please come forward and share his Calling names. with all of us. NSTI Indore, Mr. Babu. Respected Secretary Sir and respected Director Sir and Regional Directors of both IGNOU and NSTIs and DGETs. I'm very lucky that IGNOU and DGET is mingling together. Ours is basically a skill program, especially women being mostly people, they don't do degrees immediately after ITA, they go for marriage, other things. This program is very, very useful for the students and they can go bigger beyond after marriage also. And simultaneously within 2 to 3 years, they will get degree. Future, many students, they can be independent, even if they have skills, but they don't have any other degrees, professional degrees. This IGNOU degree will be very useful for them in further their benefit of life as well as social and economical benefits. Thank you very much, sir, for giving opportunity for our NSTS to contribute towards IGNOU. And I know I'm one of the students of IGNOU earlier, so it's very useful for our system. Our total ITIs in India will be benefited. Thank you very much, sir, for giving opportunity. Thank you very much, Mr. Babu. It is heartening to know that you are also a student of IGNOU. We are really very proud of you. May I now request Srimati Shashi Mathur from NSTI Noida to please come forward and share her thoughts. Good morning, everyone. सम्मानीय सभी अतिथिगण, और ये आज एक बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग और मतलब MSD और IGNOU के साथ मिलकर हमने ये कार्य शुरू किया है। और मेरे NSTI नोएडा में काफी स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं और हमने जानकारी भी ले ली है। अभी एज ऑन टुडे 572 स्टूडेंट्स अभी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें करीब 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ 10th पास हैं, जो 12th के कार्यक्रम में हम उनके लिए प्रयास करेंगे। और करीब 300 जो बच्चे हैं वो 12th पास हैं, तो वो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। और आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है और मेरे साथ IGNOU के ऑफिशियल्स भी नोएडा से आए हुए हैं,
तो बहुत एक गर्ल्स के लिए और एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एजुकेशन और स्किल मिलके हम बच्चों को बहुत एक ऊंचे मुकाम पे ले जाएंगे, जिससे कि देश की भी तरक्की होगी और बच्चे हुनर के साथ, पढ़ाई के साथ स्किल भी सीख लेंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो आप सभी का और सेक्रेटरी सर का और इग्नू का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस मिशन को हम सक्सेस बनाएंगे और सब मिलके इसको बहुत ऊंचे मुकाम तक ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। आपके साथ हमारे हाय ऑफिशियल्स भी इग्नू के इन्वॉल्व हैं। मैं जी उनसे सर। भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ दे कैन स्पीक few words on this occasion. Honorable Vice Chancellor, sir, Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, our Director, Regional Services Division. Sir, good morning. I'm Dr. Siran Mukherjee, Additional Director from IGNOU Regional Center, Noida. With me, I also have my colleagues, Dr. Saklani and Dr. Anjana from IGNOU Regional Center, Noida. We are here at National Skill Training Institute, Noida, with our madam, Dr. Mrs. Shashi Mathur. Sir, this is a very good initiative, and we assure from on behalf of Regional Center, Noida, and the university as such, to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, all our cooperation, all our support, and hope that NSTI and Regional Center Noida will provide all the facilities for skill development as well as education in this unique and novel endeavor, and hope that we will be able to provide skill as well as education, kind of dual certification to the students for their better future and good prospects in the life ahead. So thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much for this wonderful initiative taken by Noida. We'll go to NSTI Kanpur. May I now request the head of the NSTI Kanpur Center, Mashilani ji, please come forward and share your thoughts with us. Good morning, sir. Honorable Secretary MSDE and Honorable Vice Chancellor IGNOU Delhi. I am Aslamani, Regional Director, RDSD UP. It gives me great pleasure to inform you that I am the alumni of IGNOU, and I did my MBA from IGNOU during the year 1998. And it helped me a lot in securing my employment as a Deputy Director through UPSC. I'm very proud to say that I am the alumni of IGNOU University. Under RDSD Uttar Pradesh, we had two national skill training institutes, one at Kanpur, the other one at NSTI Women, that is at Allahabad. And we had very detailed discussions with the regional director, Dr. Manoma Singh of the Regional Center Lucknow. And NSTI Kanpur has been registered as Extension Center on 24 January 2022. And we have planned the VC with all our CATS trainees on 28 January to brief the admission procedures and by the Regional Director IGNOU. And we had also detailed discussions with Dr. UN Tripathi, IGNOU Regional Center Varanasi, and we also would like to have the detailed interaction with briefing of the admission procedure on 28th January 2022. And whatever the program, the degree program under IGNOU-MSDE initiative will be definitely help our trainees for their career growth and vertical development. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks a lot. So thank you very much, Mr. Masila Mani. Happy to know that you are also a proud, distinguished alumni of Indira Gandhi National Open University. You have done your MBA from IGNOU, so you know the system better. And I'm sure that with your leadership, the students who will join Indira Gandhi National Open University through your NSTI will definitely get better services. We now go to Northeast.
to Shillong. May I request NSTI Tura, Mr. AP Singh Sahab, to please come forward and share his thoughts. नमस्कार सचिव महोदय, भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय सर, other dignitaries sir, and Professor Rao sir, I am very happy to share my views on this occasion sir. Tura being at the remote location of the country, इधर सर बहुत ही प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जो ट्रेनिंग हमारा नहीं उच्च शिक्षा पाता था, वो अभी समय जो है वो इस इग्नू सेंटर के आने से बहुत अच्छी शिक्षा उसको मिल सकेगी। और रिमोट लोकेशंस के जो लोग हैं, जो हमारा गारो रीजन के इधर का क्षेत्र के लोग हैं, जो इधर रेगुलर स्टडी में आगे नहीं बढ़ पाते थे, वो बहुत ही लाभप्रद होंगे इससे सर उच्च शिक्षा में। और हमारा जो आरबीटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर एनएसटीआई का है हमारा जो अभी, तो वो हमारा लिए लाभान्वित करेगा हमारे सेंटर के लिए, क्योंकि इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता था सर अभी हमारे कोर्सेज के लिए पूरी तरह से। अब इग्नू सेंटर खुलने से एक नया आयाम स्थापित होगा जो हमारे और इग्नू के बीच में, जो बच्चे हमारे बहुत ही आगे बढ़ सकेंगे। और विशेषकर रिमोट एरिया के जो गारो रीजन में बहुत दूर दूर से बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको इस सहयोग के लिए और मंत्रालय के इस संचालन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि एनएसटीआई तुरा जो है वो और हमारा शिलोंग रीजनल सेंटर के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य करने में सक्षम होगा। धन्यवाद सर। Thank you, Mr. Singh, for these nice words. May I now request NSTI Jammu, Mr. Saxena, BK Saxena ji. Please share your thoughts. Good morning, sir. Honorable VC IGNOU, Honorable Secretary MSDE, Pro VC sirs and madams, Dr. Mahapatra, DG Saab, DDG Saab, my senior director and my colleagues. It's a matter of joy and we are really excited that we have got this opportunity to have this center of IGNOU in our premises now, because our trainees and students which are enrolled in our courses, we have seen that they are always in search of some degree in parallel. Just I took a sample of one class consisting of 25 trainees which are undergoing training in our institute. So I found that out of 25, 10 trainees have already enrolled in some distance degree from some other university, including IGNOU, and 15 are very much enthusiastic to take up the degree, but they are not finding some opportunity. So now I think everybody will have an opportunity to have ITI or other CITS along with acquiring this degree also. So this will be very helpful and beneficial for our trainees. And I'll just like to inform you, sir, we have got one center at Jammu. Under the center, we have got one extension center at Leh and one extension center at Srinagar also. And in Srinagar, we are already, we have contacted the regional directors of there, and he is in touch with our staff there. In Leh, sir, we could not contact the regional director because I think it's monitored by RSD New Delhi only, but we'll be shortly contacting them, and we would like to have center in all the three places. In fact, what I have just interacted with the trainees of Leh and Srinagar, there is a lot of potential in Leh, sir, and people are very enthusiastic to go for academics. We have got affiliation for one unit in our courses in Leh, but we have got registered two units. Now we have to get extension of our affiliation. And similarly, sir, in Srinagar also, we had capacity of only one unit, but two units have already enrolled with our training institute. And they are all very much in need of going for higher education like degrees. So we would like to run BA in our institutes. And just to sum up, sir, I would
like to inform you also that myself also, I am an ex-alumni of IGNOU. I registered for MBA course in my in year 2000 when I was posted at Calcutta. But due to some personal circumstances, I could not continue. I got transfers and all. So I think IGNOU will be very beneficial for our trainees, and I would request our IGNOU के हमारे जो directors, our regional director is here from IGNOU, Jammu branch. He will like to Here from IGNOU, so say a few words. Honorable Vice Chancellor Sir, Pro Vice Chancellors, Namaskar, Resident Director Sahab, and Namaskar to Shri Rajesh Agarwal ji. सर हमारी सर के साथ मीटिंग 3-4 दिन पहले हुई थी, तो इस रिगार्डिंग हमने विस्तार में पूरा डिस्कशन किया है। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ पर इग्नू का एक्सटेंशन सेंटर अभी यहाँ पर इनॉग्रेट हो चुका है, तो होपफुली इनके साथ हम एमओयू साइन करके वो कॉपीज आपको भेज देंगे। तो जो भी इनको फैसिलिटी या हेल्प हमारी चाहिए होगी वो हम ऑलवेज प्रोवाइड करेंगे। और जैसे इनके पास काफी बच्चे एनरोल्ड हैं जो कि इंटरेस्टेड है कि इग्नू में वो एडमिशन लें, तो उसके लिए भी हम इनको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मेरे साथ मेरे कलीग्स डॉक्टर आशा उपाध्याय एंड डॉक्टर संजीव गुप्ता आर आल्सो प्रेजेंट सर। सर एज पर योर डायरेक्शंस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, और हम चाहेंगे कि दूर दराज के इलाकों में भी बच्चों को इग्नू के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Jammu. And we are very proud that Mr. B.K. Saxena is a distinguished alumni of Indira Gandhi National Open University. May I now go to NSTI Bhubaneswar. We have Mr. Mandal, who is the head of the NSTI Bhubaneswar. And with him is our regional director, Dr. S.K. Tripathi is there. So, Mr. Mandal, will you please share your thoughts? Mr. Mandal and Dr. Tripathi. Yes, Namaskar sir, RC Mandal, Deputy Director and HO, NSTI Bhubaneswar. सर हमारे यहाँ 30 डिस्ट्रिक्ट है और 30 गवर्नमेंट आईटीआई है, जिसमें कि मैंने एमओयू जो हुआ है उसके बारे में मैंने चर्चा भी कर ली है। और जो हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर कोरापुट रीजन जो कि दूसरा आरसी है आपके इग्नू का, मैं उनसे भी चर्चा किया हूँ। एसके त्रिपाठी सर यहाँ आए थे, उनसे भी बृहद वे में डिस्कशन हुआ है और उन्होंने भी इसमें हम लोगों को काफी हेल्प करने की सोची है। और हर एरिया में जो उनका पहले से जो सेंटर चल रहे हैं उनके थ्रू हम लोगों को आगे एक योजना बनाए हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत कामयाबी से ये काम करेंगे। उम्मीद है ये जो एमओयू हुआ है हमारे उड़ीसा के खासकर वो क्षेत्र जो केओंझर है और कुछ हमारे यहाँ जो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो कि काफी रूरल एरियाज में है, उन लोगों के एरिया के छात्रों को काफी बेनिफिट होगा। उम्मीद है ये जो हमारे एमओयू हुए हैं खासकर इग्नू और एमएसडी के बीच हम लोगों के लिए काफी फलीभूत होगा। और खासकर उड़ीसा के उन जिलों के लिए जहाँ की छात्र हमारे एमएसडी में हमारे आईटीआई में नहीं आ पाते थे और हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे, उन लोगों के लिए काफी योगदान साबित होगा। हमारे साथ डॉक्टर बिमल चंद्र नंदा जी है जो डिप्टी डायरेक्टर है और डॉक्टर प्रभात कुमार जेना जी है जो असिस्टेंट डायरेक्टर है। डॉक्टर बिमल चंद्रा जी वो भी कुछ वर्ड बोलेंगे सर। धन्यवाद सर। Please say your views. Honorable Vice Chancellor IGNOU sir, Honorable Secretary MSD, Honorable Pro Vice Chancellors and Director IGNOU, other esteemed dignitaries from IGNOU, from the ministries, and our esteemed partners from NSTI. Very good morning to all of you. Myself, Dr. Bimal Chandra Nanda, and my colleague Dr. Prabhat Kumar Jena are the witness to this historic moment where we all are partners in India's development.
And on behalf of IGNOU Regional Center Bhubaneswar, I reiterate that IGNOU Regional Center Bhubaneswar will provide all support, all cooperation, all help, and will proactively work towards taking skill and certification to the doorstep of the learner. As we all know, skill and certification are essential components of any kind of education, any kind of lifelong learning. So I am very hopeful. I am very optimistic that NSTI will do very well in the skill component, and IGNOU will go the extra miles to provide the certification, and we all can contribute to India's development in our small ways. So I request all our partners from NSTI, all our colleagues from IGNOU, that we all work together to make this venture a successful one. And I congratulate as well as wish all the best for this venture to all the partners. Thank you and over, sir. Thank you, Mr. Mandal and your team at Bhubaneswar. It's a nice institution, I was told, and we look forward to more close association with NSTI Bhubaneswar. Our last interaction with the field is with NSTI Mumbai. Can I request Mr. C.S. Murthy, who is the head of the NSTI Mumbai and our regional director, to quickly say a few words. Good morning, sir. Good morning, everybody. This is Murthy, regional director. Here myself, along with Dr. Krishna Rao, regional director from Mumbai, we both are present. In fact, as per the guidelines, we have spared a 400 SFT room for the purpose of interaction with the students in our premises. And right now we have nearly 600 CATS trainees with us, out of whom nearly 300 students have already completed. So this 300 are the CATS students who have completed 12th class. We will encourage them to enroll for the degree programs. This is the first step we are going to take, sir. The second, the step what we are planning to do is we reach out different ITIs looking for the ITA passports having the 12th class qualification, as well as ITA pursuing students having the 12th class qualification, so that the purpose of this project would be met by meeting the target immediately, sir. So, in fact, we had interacted with the regional directors of Nagpur. Okay, there is some disturbance from Mumbai, but anyway, we could listen to the head of the NSTI Mumbai. Because of the shortage of time, it's not possible to accommodate and interact with all the other NSTIs. I know, I wish them all the very best. Our regional directors at 56 regional centers are also participating. And I only hope that they will have greater collaboration with the NSTIs and then with the ITIs and the Pradhan Mantri Kausal Kendras and the Jan Shikshan Sanstans. We now come back to the headquarters. May I now request our Honorable Vice Chancellor, IGNOU, to address us and give his blessings on this great movement. Honorable Shri Rajesh Agrawal ji, Secretary Ministry of Skilling and Entrepreneurship, officials of MSDE at 33 centers all over the country, distinguished officials from the ministry, my own colleagues. It's a great moment for all of us. Ministry of Education is trying to have the access in our national education policy.
And we are having 56 regional centers and more than 2,000 study centers spread all over the country. Even abroad also we are having a few study centers. But the skill component, which has been emphasized by the National Education Policy 2020, it is to be integrated in our curricula. And we have done it in our undergraduate level for BCom, BSc and BA. But that skilling component, it will not be complete unless they are having the practical exposure. And for that, Ministry of Skilling and Entrepreneurship has come up in a big way to help us in this endeavor. And all the 3 extension centers of MSDE IGNOU, they will facilitate our learners, not only in terms of registrations or examination centers, but in addition, they will also try to supplement the initiatives of skilling, which the IGNOU wants to add in their programs. Right now, we are having 100 PG and UG programs, along with 150 certificate diploma programs. And half of these programs, they are having the skill components. And the practical exposure, the field exposure, we are really fortunate to have the support of the ministry, because they are having good number of ITIs, good number of polytechnics, good number of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Kendra. And we want to reach to all those places where even the skill centers are there, and they want the educational component. Both are to be integrated. And this integration, it is being facilitated by our ministry. It's a great support. It's a great initiative. And through that, right now, we are having an annual fresh enrollment of around 9 lakh learners. But once we add the people who are having the skill component with them, and if they get this knowledge of higher education, then they will become the skilled graduates, and they can contribute much more significantly in the national development process. Because our concern is to produce employable youths, employable graduates, and without skills, the graduates, they can't be employable. We are having, of course, a few courses in tourism, a few courses in health sector, a few courses in management and computer science. But there are few more programs where the skill component that can be added. We are also having School of Vocational Studies. We are also having the School of Performing Visual Arts. And everywhere the skill component is required. And fortunately here, the learners who are studying in those skill centers, in IITs or in polytechnics, sorry, in ITIs and in polytechnics, they also get a ready-made platform where they can register for higher education in IGNOU. And they can also simultaneously pursue their programs after 10+2 for skilling, as well as they can also pursue the UG programs from IGNOU. So this is also a great advantage for those people who may have simply a diploma course in skilling, but once they have this degree course also with them, then their value will further be enhanced and they can become much more employable graduates.
It's a great initiative, great support. And fortunately, our minister, he is also looking after both the ministries, Ministry of Education and the Ministry of Skilling and Entrepreneurship. And he has integrated both of us also. I must thank also our Honorable Minister of Education for supporting this great initiative. And especially thankful to the Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for encouraging this integration process with IGNOU, the biggest university in terms of student strength all over the globe. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for guiding us, giving us the words of encouragement under this new initiative. And I'm sure that all the officials working at the regional centers across the country will definitely carry this forward with the spirit in which the MOU has been signed with the Ministry of Skill Development. I now request the Honorable Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Rajesh Agarwal ji, to give his blessings and address all the field officials across the country. Sir, please. Yeah, thank you. Honorable VC of IGNOU, Nageshwar Rao ji, all the officials of IGNOU at headquarter and field levels, and all my colleagues from the Skill Development Ministry. So I am very, very happy at this short and sweet inauguration function today, a joint inauguration function. जैसा कि वीसी साहब ने भी बताया, जो नई एजुकेशन नीति है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डलवाए हैं, उसमें स्किल और एजुकेशन इन दोनों को अमलगमेशन का बात बहुत ही क्लियरली बोला गया। पहले पुरानी शिक्षा नीतियों में भी था, पर इसमें बहुत ही क्लियर एक रोड मैप भी दिया गया है उसमें। और एंड आई एम श्योर इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट बट बाय डिजाइन कि अपने मंत्री भी कॉमन ही है। धर्मेंद्र प्रधान जी स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री, और हमारा स्किल जो दोनों के बीच में बैठता है, अगर हम एज प्रोफाइल देखें बच्चों का, तो इन तीनों के मंत्री एक ही बनाए गए हैं। मैंने तो जब से 4 महीने से ज्वाइन किया है, हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते तीनों डिपार्टमेंट इकट्ठे किसी ना किसी रूप में बातचीत कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। अपने देश के बच्चों का और युवकों का, और खासकर 21वीं शताब्दी की डिमांड है कि सबका ना कि बौद्धिक विकास हो, दैट मीन्स एकेडमिक नॉलेज सबको होना चाहिए चीजों का, बट जो हैंड्स ऑन स्किल्स है, मतलब बुद्धि से भी काम लेना है, हाथों से भी काम लेना आना चाहिए हर बच्चे को। सो एकेडमिक स्किल्स, एकेडमिक नॉलेज प्लस हैंड्स ऑन स्किल्स, दे आर इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा हर बच्चे को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, अंग्रेजी भी आज जरूरत बन चुकी है समाज की, फिर टीम वर्क कैसे करना है, फिर एक डिसिप्लिन में 8-10 घंटे खड़े होकर आप कैसे काम करोगे फैक्ट्री में या कहीं भी, फिर आपको सोशल एटिक्वेट आना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप की भी, उद्यमशीलता भी होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि सभी अगर जॉब डिमांड सीकर, जॉब सीकर बन गए तो जॉब गिवर भी होने चाहिए। तो इसलिए बच्चे को हैंड्स ऑन स्किल्स भी हो और एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी बच्चा ले, ये बहुत जरूरी है। तो अभी यूजीसी के आप कार्यक्रम देखो, वो भी बोलते हैं कि 1/3 तक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोर्सेज चेंज कर सकते हो, अप्रेंटिसशिप एम्बेड कर सकते हो, इंटर्नशिप एम्बेड कर सकते हो। और अभी कोविड के बाद तो रिमोट इंटर्नशिप्स या डिस्टेंस इंटर्नशिप्स बोल लो, उसको भी अभी मान्यता प्राप्त हो रही है। और उसी के चलते अब इनफैक्ट कोविड के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि शिक्षा और काफी हद तक स्किल एजुकेशन भी किसी किसी खास स्किल में आप रिमोटली भी प्राप्त कर सकते हो।
तो इसलिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसका महत्व और बढ़ गया है अक्रॉस द ग्लोब। तो उससे इग्नू जैसी यूनिवर्सिटीज का महत्व और पहले से बढ़ गया है, क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया कि डिस्टेंस एजुकेशन कैन बी एज इफेक्टिव एज क्लासरूम एजुकेशन इन लॉट ऑफ सिनेरियोस। फिर स्किल यूनिवर्सिटीज भी आ गई हैं, जिसमें काफी जोर स्किल्स पे भी है और साथ में एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पे भी है। फिर अब समग्र शिक्षा में हम तो छठी से बात कर रहे हैं, छठी से 8वीं तक 10 बैकलेस डेज हो, बच्चों को इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले, लोकल इंडस्ट्री का, और 9वीं से 12वीं में फॉर्मल जो कोर्सेज हों स्किल्स के, चाहे कारपेंट्री हो, चाहे ड्रेस मेकिंग हो, या कोडिंग को मैं एक तरह से हैंड्स ऑन स्किल्स नहीं मानता, उसको बौद्धिक स्किल ही मानता हूँ। इन सबको भी इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल दर्जा मिले, कि बच्चा फिजिक्स कर रहा है, हिस्ट्री कर रहा है, कि कारपेंट्री कर रहा है 9वीं 10वीं में, उसमें कोई फर्क ना पड़े। और वैसे वर्षा हम चाहते हैं कि हमारी ITIs के बच्चे हैं, PMK के हैं, या जन शिक्षण संस्थान में आते हैं, और जन शिक्षण संस्थान में तो इनफैक्ट 70-80% लड़कियां होती हैं, वो उनका एज प्रोफाइल एक्चुअली वो शादी के बाद 1-2 बच्चे होने के बाद 30-35 साल का प्रोफाइल भी है। उन सब में एस्पिरेशंस भी है और समय की डिमांड भी है कि वो साथ साथ में फॉर्मल जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, 10th सर्टिफिकेट है, 12th सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन है, वो भी उनको मिल पाए। हमारा जो स्किल मिनिस्ट्री, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे, ITI का बच्चा है, उसने फॉर्मल कोर्स कर लिया, फिर वो बोले मैं ITI वाला काम नहीं करूंगा, मैं शॉप फ्लोर पे काम नहीं करूंगा, क्योंकि नौकरियां एक्चुअली अभी ज्यादा हैंड्स ऑन स्किल वालों को मिल रही हैं। फ्रैंक इंजीनियर खाली बैठ रहे हैं देश की, ITI वाला बच्चा जो अच्छे से पढ़ जाता है वो खाली नहीं बैठता। पर अगर उसके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशंस भी हो, ग्रेजुएशन हो सकता है 3 साल बाद, 5 साल बाद वो शॉप फ्लोर पे सुपरवाइजर के लेवल पे पहुंच जाए और आगे बढ़े, और जिंदगी में भी उसकी सभी इच्छाएं इकट्ठा एक होलिस्टिक लेवल से वो आगे बढ़ सकता है। तो हमने जो ब्रॉडली स्किल का डेटा देखा है, और आप सबने भी रीजनल लेवल से वही बेसिकली इन्वेस्टिगेट किया, कि हमारे सिस्टम में 50,000 से 1 लाख साल तक हर साल जो बच्चे आ रहे हैं वो 8वीं पास होते हैं। तो हमको ओपन स्कूल के साथ भी हम इसी तरह का आगे बढ़ रहे हैं, नेशनल ओपन स्कूल के साथ, कि वो बच्चों को 10वीं का सर्टिफिकेट मिल पाए। फिर तकरीबन 5 से 10 लाख बच्चे, इट्स ए वाइड रेंज, जो हमारे स्किलिंग सिस्टम में आ रहे हैं हर साल, वो 10वीं पास है, 12वीं पास नहीं है। हम चाहेंगे वो साइड बाय साइड 12वीं पास भी। और फिर 10 से 20 लाख बच्चे हर साल, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग नंबर्स, जब हम PMKK, JSS और ये सब मिला लेते हैं, ये 12वीं पास होते हैं। अभी हमारे पास डेटा नहीं है कि उसमें से कितने बच्चे पैरेलली डिस्टेंस लर्निंग में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। पर इन सेंटर से जो हमने अभी 33 NSTI में चालू किए हैं, उससे हमें अगले 1-2 महीने में पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा, और डेटा कलेक्शन हो जाएगी हमारी, और हम सबको एनकरेज करेंगे कि आप पैरेलली जो 12वीं पास कर चुके हैं इसमें एनरोल कर जाए। उसमें से लकीली जो सेशंस होते हैं इग्नू के, जनवरी और जुलाई सेशंस होते हैं। तो अभी हम जनवरी सेशन का अभी कोरोना की वजह से या किसी वजह से फरवरी एंड तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अपना सबका स्किल मिनिस्ट्री के सभी ऑफिशियल्स को मेरा आग्रह रहेगा कि अब बच्चों को, NSTA के बच्चों को और आसपास की ITA के बच्चों को भी एनकरेज करके कि इसमें एनरोल करना चाहें तो करें। जैसा कि BC साहब ने भी बताया कि उनके कई सब्जेक्ट्स में भी जो वाइस वर्सा है कि स्किल्स का काफी वो एम्बेड कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो उनको कुछ भी मदद चाहिए हमसे करिकुलम फ्रेम करने में, किताबों में, हमारे पास भी डिजिटल कंटेंट है स्किल्स का, कुछ उनके पास है, हम वो भी शेयर करके एक दूसरे के सिस्टम में इस्तेमाल कर पाए। अल्टीमेटली इट्स ए नेशनल रिसोर्स। एक पैरेलली एक कमेटी बनाई हुई है मंत्री जी के ऑर्डर के मुताबिक, अपने NCVT के चेयरमैन है कलसी साहब, उनकी अध्यक्षता में, जिसमें UGC के मेंबर्स भी हैं, AICT के मेंबर्स भी हैं। और हमने पिछले हफ्ते कलसी साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि
इग्नू के वीसी साहब को भी एज ए स्पेशल इनवाइट करें, वो नेक्स्ट मीटिंग में वो अपना अलग पर्सपेक्टिव ला पाएंगे डिस्टेंस लर्निंग की तरफ से, ताकि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बने, एकेडमिक क्रेडिट्स ट्रांसफर हो सके। जैसे कोई 10वीं पास बच्चा है, उसने 2 साल ITI कर लिया, तो अभी वो इग्नू का कोर्स या कोई BA रेगुलर यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाता, क्योंकि वो 10+2 को 12वीं के बराबर का दर्जा नहीं प्राप्त। एक ब्रिज कोर्स करके नेशनल ओपन स्कूल से हम वो दिलवा देंगे, वो जैसे मैंने बोला वो चल रहा है, पर हम तो उससे आगे बढ़ के चाहते हैं कि 10th तक बच्चे ने किया, फिर 2 साल ITI किया, तो उसको 12वीं के बराबर माना जाए किसी भी कोर्स के लिए। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो गया, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स की बात हो गई, और उसको इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात हो गई। पर पैरेलली अभी हम जो नेक्स्ट सेशन अपना 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा CTS वगैरह का और CITS का भी, तो उसमें हम 1600 घंटे की बजाय 1200 घंटे ट्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन या ED जहां भी होता है। 240 घंटे अपन लैंग्वेज कोर्स में देने वाले हैं, और 160 घंटे इंडस्ट्री या ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो वो 240 घंटे लैंग्वेज लाने के बाद ITI कोर्स में और CTS में, चाहे वो ITI में चले चाहे NSTI में चले, तो फिर एक ब्रिज कोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा पैरेलली ओपन स्कूल में रजिस्टर होकर उसको 12वीं अपने आप मिल जाएगा। पेपर ठीक है, हम जरूर चाहेंगे कि ओपन स्कूल वाले भी पेपर लें, और जो बच्चे अपने 12th पास अभी एनरोल करेंगे, इग्नू का बिल्कुल 3 साल का उनका टाइम फ्रेम है, हर 6 महीने बाद पेपर है, तो उसमें भी हमारे सिस्टम को एनकरेज करना है बच्चों को कि उसमें कंटिन्यू करें, छोड़े नहीं। और आजकल तो पूरा ऑल इंडिया पोर्टेबिलिटी है, जैसे VK सक्सेना जम्मू से बता रहे थे कि उन्होंने एनरोल किया था MBA के लिए, पर बीच में छूट गया। कईयों ने पूरा भी किया है हमारे ऑफिसर्स ने, तो बीच में छूटे भी ना बच्चों का। वो पोर्टेबिलिटी तो भाई कि बच्चा कहीं पे जाके कहीं की भी क्लास अटेंड करने की उसको जरूरत है, और आजकल तो डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस वो जूम के थ्रू हो, कैसे भी हो, वो सब बच्चे अच्छे से उस पर भी सीख जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ड्रॉप आउट की संख्या भी कम हो जाएगी कि इग्नू के कोर्स में रजिस्टर किया तो बच्चे कंप्लीट करके ही निकले। तो अपना फोकस कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ रजिस्टर करवा दिया, एक नंबर की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। अपने को नंबर चेजिंग में मैं नहीं पढ़ रहा, अपने को जहां जिस बच्चे की जरूरत है उसमें जाएं, प्रॉपर कोर्स में एडमिशन दिलवाएं। और इग्नू के भी जैसे इन्होंने कहा कि प्योर एकेडमिक कोर्सेज भी हैं, हाफ स्किलिंग वाले कोर्सेज भी हैं, तो अपने बच्चों को सभी अपने कोर्सेज की बता दिया जाए, स्किलिंग काउंसलिंग कर दिया जाए, तो बच्चों को जिस तरह के कोर्स में जाना है उस तरह के कोर्स में बच्चा जाए। और कई बच्चे मल्टी स्किलिंग भी करना चाहेंगे कि हमारे पास हैंड्स ऑन कोर्स और कोई लिया है, इग्नू का ग्रेजुएशन और किसी कोर्स में भी कर रहे हैं, स्किलिंग कोर्स प्लस एकेडमिक में, तो वो भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आजकल मल्टी स्किलिंग का भी जमाना है, उसकी रिक्वायरमेंट की है। तो ये एक अपनी एक शुरुआत है जो RDSD और NSTA प्रिंसिपल्स आज कर रहे हैं। आप बेसिकली अपने CITS CATS के बच्चे जो अपने कैंपस में, उनसे शुरुआत कर रहे हो। अपने DGT वाले ग्रुप पे कई अधिकारियों ने ये भी पूछा हमसे कि है क्या सिर्फ ये बच्चों के लिए, हम भी एनरोल कर सकते हैं MBA या किसी और चीज में? तो हमने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल टीचर भी, मास्टर भी हो, आप बच्चे भी बनो, अभी स्टूडेंट भी बन जाओ इग्नू के साथ में पैरेलल, उसमें क्या बुराई है। और सीखते तो नाउ वी आर स्टूडेंट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब 50 की उम्र हो जाए, 60 की उम्र हो जाए, ना सीखने की चाहत कम होती है, ना सीखने की क्षमता कम होती है, और ये रहना चाहिए। वी शुड बी स्टूडेंट्स थ्रू आउट अवर लाइफ्स। So I am very happy that IGNOU officials and VC Saab and his entire team, they responded so quickly to our requests, and within 2-3 weeks we have been able to tie up some loose ends. और अभी भी जो छोटी मोटी चीजें हैं, कितने स्क्वायर फुट का कमरा चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑटोमेटिक डेटा कैसे फ्लो हो जाएगा, पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी, किताबें कैसे हाथ में आएंगी, या जो बच्चा कहता है ठीक है मैं डाउनलोड कर लूंगा, उसकी 15% फीस कैसे बच जाएगी। तो ये हमारा सिस्टम भी धीरे धीरे सीखेगा। और पैरेलली हम जुलाई से पहले हम चाहेंगे अप्रैल एंड तक हम
और काफी सारी ITIs, जन शिक्षण संस्थान, PMKK सेंटर्स या कुछ प्राइवेट स्किलिंग सेंटर्स भी हैं बहुत सारे, चाहे वो उषा स्विमिंग मशीन सेंटर हो, चाहे बॉश का हो, चाहे और कोई हो, चाहे ICC फाउंडेशन अकेडमी हो। हम उनको भी रीच आउट करेंगे कि बच्चों को एक एकेडमिक्स में घुसने का भी बड़ा इजी तरीके से चांस मिल जाए और बच्चे हैंड्स ऑन स्किलिंग भी सीखें, देश के बच्चे, और साथ में एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी पाएं और अपने जीवन में और आगे बढ़ पाएं। तो जितने फील्ड ऑफिसर्स हैं उन सबको मेरी शुभेच्छा, and I am also very excited and a bit emotional to see this project taking shape in such a short time, and we are all committed to the cause of nation building, और भगवान ने हमें मौका दिया सबको कि देश के लिए, बच्चों के लिए कुछ करने का। We should be grateful to God and do this job with full commitment, with full honesty, and not really take it up as कि ऊपर से एक आदेश आया है करना है। हमें मन से एक अगर काम करेंगे तो आप रिटायरमेंट के बाद भी जब बैठोगे, 70 साल के हो जाओगे, सोचोगे आपको कि जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा किया, इसका एक बहुत सुकून मिलेगा। So my thanks to the entire IGNOU team and best wishes to everyone. Thank you so much. Thank you, sir, for this wonderful thought, for giving us a vision and a roadmap for integrating skill education and higher education in this country. From IGNOU side, we can assure you full cooperation, 100% commitment, and we are very sure that this scheme is going to create wonders in this country, particularly for the youth of this country. Regarding admission and registration, from today onwards, we'll try to link all the 33 NSTIs in our admission portal. I've already discussed this matter with our registration division, and they are working on it. So from tomorrow, I would say, if not today, from tomorrow, any student going to the NSTIs can get enrolled in IGNOU's different programs, particularly the bachelor degree programs. And all other things about establishment of IGNOU Center in ITIs and Pradhan Mantri Kausal Kendras and JSS will follow very soon. We have already started working on it. Thank you once again for all the support that you are giving to us at this moment, when particularly we are all keen to introduce and implement the National Education Policy 2020 with real commitment from both sides. Thank you once again. May I now request the Director MSDE, Dr. BK Reji, to please give the vote of thanks. Thank you, Professor. Respected Secretary Sir, respected VC Sir, all the senior professors, pro-vice of IGNOU, and my colleagues in NSTIs, Minister of Skill Development, and all regional directors of IGNOU in different places. I don't have words to how to thank both my secretary Rajesh Agarwal sir, and he's so emotional actually. He's without his constant, regular, almost on a daily basis. He insisted that he's a man actually. Students are in heart actually. Always he thinks about the students. How should it be meaningful? Actually? How should we meaningfully address their problems? And this will be a really path-breaking integration in terms of scaling and higher education. Today we have just a beginning actually, and its real result will increase, be seen in a manifold, in a very big setup. It will come out in 5 years' time, 3 to 4 years' time. You will see it's a real impact of the scheme. So I am thankful to you, sir, for your constant guidance for this project and your 100% cooperation. And this would not have been possible, of course, with the VC Saab's 100% active cooperation. The moment I spoke to him, he gave a green signal for everything. Actually, we had a 5-minute discussion.
he said yes to everything that we wanted actually. So I'm thankful to VC sir and Professor Mahapatra, the entire IGNOU family. Less said the better, because I don't have words to thank each and everybody. I wish I could thank each one of them. I interacted. There have been never a negative sentences from any of them. To ensure that the scheme runs smoothly, I would request Professor Mahapatra. We have a WhatsApp group of like NSTA principals and regional directors and a few of the people from the university office, so that actually the initial hiccup which may arise due to registration, examination, etc., these are actually answered in the group itself. And this monitoring committee that we are going to frame, so they meet at least a couple of times in a month. Initially, at least the first quarter, then things are actually really smoothen out, and we achieve the target. Currently, this IGNOU has 9 lakh student enrollment. I think actually in a year time, actually, we will have more than 1 lakh contributing from our sides, or maybe much more than that. Actually, we will have soon by July session, we may have some substantial number to show up. And this initial effort actually of ours would pay dividend. So I express my deep gratitude and thanks to everybody involved, including Secretary VC sir, and the entire IGNOU family, NSTI family, DGT family, and MSD family, and all those people who have supported from directly, indirectly, from inside and outside. Of course, to some extent, our media team, who are going to spread this integration, news of integration, in motivation of the students to join this program. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Dr. Ray, for this wonderful, positive expectations from this project. With the permission of Honorable Secretary, Ministry of Skill Development, and Honorable Vice Chancellor, Indira Gandhi National Open University, we will now close this webinar. I once again thank all of you for the participation. Thank you, sir.